this is Millie Chaube, and you're catching me on India News Music. Today we have a special guest with us. His name is Smaran. आप सब इनको जानते हैं because he's very famous and very charming actor. Hi Smaran, how are you? Hi, I'm very well. How are you? सबसे पहले तो मैं आपकी मूवी के ट्रेलर की बात करूंगी जो कि मैंने देखी है। मूवी भी मैं ऑफिस से जैसे ही काम रैप होता है वैसे ही मैं घर जाकर देखूंगी। तो मूवी का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग और काफी सही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अबाउट द कलर्स ऑफ लव, क्या है Hmm. मूवी के बारे में एंड अबाउट योर रोल टू। The movie is basically based in Surat, Gujarat, and मेरा जो किरदार है that is that of a sex therapist, and it's just a slice of life film based upon how he, as a psychologist and a therapist, is going through depression because of certain issues in his life, certain relationship issues, and eventually he needs medical intervention. He needs another psychologist to kind of run through his life and make sense out of what he's going through. So yeah, that's the film. It's just Very about sweet. Yeah. it's just a bunch. It's about this bunch of people who have met. He has his own friend circle, and they have their own quirky ways of how they're dealing with life, and it's just a sweet slice of life film. सो मैं जानना चाहूंगी कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी एंड ऑफर हुआ था रोल कि आपको ये डॉक्टर का रोल प्ले करना है, तो व्हाट वाज योर जी रिएक्शन और क्या आपने तुरंत से हाँ बोल दिया था या आपके मन में कुछ बट्स एंड डाउट्स थे कि हाँ करना है या नहीं? नहीं, मैंने इमिडिएटली हाँ कह दिया था. वी हैड अ Zoom call narration with the director, and our director Divyesh, he just was very clear with his vision. And बहुत रेयर होता है कि आप एक डायरेक्टर से इस तरह एक नरेशन लेते हैं जहाँ पे you can tell that he just has a lot of conviction in the story that he wants to portray. And मैं उसके साथ, मुझे अभी भी याद है, he just spoke about the entire script in 2 hours, and he was not even reading anywhere. You could tell that the film was in his mind, and बस धड़ाधड़ मुझे उसने सारे scenes बताए, and I was just amazed at somebody this young and this passionate who just had so much clarity in his vision, and I immediately wanted to be a part of that. स्मरण, क्योंकि यू आर मैरिड गाय, सो आई वांट टू नो टू यू कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलर्स यू हैव वॉच्ड इन योर मैरिड लाइफ और इन योर लव लाइफ? Oh, it's ever changing. It's mishran ho chuka hai ab to, because every day you go through a lot of things. But I think I feel marriage in general is very it's not understood properly, especially in our context. Indian society mein वैसे भी there's just too many things. Our cultures also enforces a lot when it comes to marriage and expectations out of the couple. But I feel any new age couple who has married in the last, I don't know, 10-15 years, they would understand that the more you get with each other, the more time passes, you understand the larger strokes. Your the paint that you stroke with life into, वो आप समझ जाते हो कि you can actually create that Yeah. landscape for yourself. And yeah, it's been fun. I've been married for what, 12 years now? I think, no, sorry, 8 years. I'm so sorry, 8 years. I was like 12. I've dated for 12 years, but yeah, married for 8. Yes. सो क्या लव लाइफ में स्पार्क मेंटेन करने के लिए जितना ज्यादा प्यार की जरूरत होती है उतनी ही ज्यादा लड़ाई झगड़ों की भी जरूरत होती है Of स्पार्क course, मेंटेन? of course. I think it's a very immaculate balance. आपको हर चीज को उस तरीके से जीना पड़ता है जहाँ पे आप समझते हैं कि ये एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप नहीं खेल सकते. इट्स सिचुएशनल. उतार चढ़ाव होता रहता है, और उसके हिसाब से आप समझते हैं अपनी बाउंड्रीज, अपनी पाबंदियां, अपने किस हद तक एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं और किस हद तक एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं. तो उसके बीच में आप खेलते हैं अपनी जिंदगी.
In this Gen Z world, Yeah. one word is very trending, which is called situationship. Hmm. So, what do you think about this word? In this word, like basically, according to me, situationship is like relationship में भी नहीं हो और relationship में भी हो. तो आप क्या सोचते हो इस word को लेकर? मैं क्या सोच आई थिंक इट्स अभी जो जैसे आपने कहा ट्रेंड चल रहे हैं या these words that are coming out of relationships in the new generation, I think it's still evolving. We're still kind of trying to figure out because through the advent of social media and जिस तरह से it's just so easy to casually hook up with each other or just meet new people. The landscape is still evolving. We're trying to figure out ये कब जाके settle होगा. So it's like a storm, right? It's chaotic in nature. People are finding different things. There are people who have found love through social media as well. So I think we should allow it to happen. We should just try and not label things because I feel whenever we try to label something, आप उसको एक बक्से में डाल देते हैं. तो है situationship होने दीजिए. Let people go through it, evolve, come out of it, or stay in it. But it will only help eventually. Yeah. Any funny moment during the shoot? Any funny moment? Yeah. Humor was always there. आप अगर हमारी फिल्म देखेंगे भी, humor is a very integral part. ट्रेलर मैंने देखा है, वो बहुत जी. इंटरेस्टिंग है. आई लाइक दैट पार्ट जब वो गार्ड आपसे बोल रहा था, आप वो वाले डॉक्टर हो हाँ ना. हाँ हाँ, तो आई थिंक हम उसी चीज पे बहुत खेलना चाहते थे बिकॉज व्हाट अजम्पशन बेस हो जाता है कि आप एक सेक्स थेरेपिस्ट हैं तो ऑकवर्डनेस आ जाती है सडनली अगर आपको पता चले. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल जस्ट आर कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है डॉक्टर है इसने एमबीबीएस किया है. बट द मोमेंट आप उस स्पेशलिटी में आते हैं तो सडनली वी क्लोज डाउन स्पेशली इन टियर 2 टियर 3 cities where people are not that open. You're sharing some funny moments about your movie and you're sharing your sex therapist वाला हाँ, तो thing. what I was saying was this only कि बहुत assumption based होता है जब आप एक सेक्स थेरेपिस्ट हैं या कुछ है वो आपकी स्पेशलिटी है तो we wanted to play with the awkwardness involved कि how other people would react suddenly when they find out that इसकी ये स्पेशलिटी है. That plus in the film itself we have various quirky characters. There's Dennis who's played by Jay who हमने वो उसके लिए एक गाना भी रखा है कि इन्फ्लू एंड वी वांटेड टू प्ले विद द होल इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ स्पेस. How people who are not into the influencer culture, how they also perceive people like that. वो सरप्राइज एलिमेंट भी है कि यार इसको कौन फॉलो करता है 2 मिलियन फॉलोअर्स कैसे बन गए मतलब सो पीपल हु आर जस्ट कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर might feel that way about the culture. तो हमने हमने खेला उस चीज से. We have humor is a very integral part of a film because we wanted to have that kind of balance where if Avi's character is going through depression and he's going through those spaces, we wanted to balance it out with these kind of humor moments and quirkiness of the other characters. So I want to know, like, who was the most funniest one on the set? Like, जिसके साथ Oh, आपने बहुत मजे किए और चिल मारे हो during the shoot. Devang, my best friend that's in the film. We just had fun because it was a very close knit space that we were all performing in, and hum we used to shoot close to 12 to 13 hours every day. And जब भी आप सेम लोगों के साथ सेट पे होते हैं रोज मिलते हैं एंड यूर जस्ट काइंड ऑफ इंटरेक्टिंग स्पेशली जब आपकी स्क्रिप्ट में इतने सारे बैंटर हो इतने सारे मोमेंट्स हो जहाँ पे आपको आपको जेन्युइन ऑथेंटिसिटी से खेलना है ह्यूमर इन्वॉल्व करना है. वी वर जस्ट हैविंग अ ब्लास्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट यस देवांग के साथ जय के साथ all the boys were just having fun. The boys gang was having fun there Yes, on the yes, set. yes, always. Because इस मूवी में मैंने देखा है there is some romantic and intimate scene too. So Yes. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप ऐसे सीन करते हो और ऐसे Hmm. intimate scene और kissing scene हो गए romantic scene हो गए तो
आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम होती है और क्या वो सीन देखती है या फिर शी इज वेरी चिल कि नहीं ही इज हैविंग हिज profession, this kind of a Yeah, profession. yeah, yeah. No, no, no. She's completely okay with it. She understands that it's my profession. There's no awkwardness involved in it, and होना भी नहीं चाहिए because आप आप एक किरदार निभा रहे हैं. You're playing a character. You're not really. It's not you. And I think my wife has been the most supportive when it comes to my profession. She has, I mean, my aaj tak, there are auditions when I have to give self tests sometimes, and she'll be right behind the camera giving the other characters cues. So this is what we have done throughout our lives. We have supported each other's careers. We've always been right there as a support beam, and we understand what it takes to actually be an actor in any industry, चाहे आप यहाँ पे हो या कहीं और पे भी हो. These are part and parcels of things. कल को कल को I could be playing anything, and you have to understand that it's just part of the thing. You don't take offense. It's not personal at all. स्मरण, अभी तो आप एक्टर हो, लेकिन क्या आप शुरुआत से एक्टर बनना चाहते थे या फिर बाद में जाके आपको लगा कि नहीं यू वांट टू बी एन एक्टर? So I started acting back in school, and मैंने यूनिवर्सिटी में भी theater join किया था, and theater was something that I have always been a part of. So that's something that was always there. But yes, I would deny the fact कि कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्टर्स कहते हैं कि यार मैं बचपन से अपने आप को पर्दे पे देखना चाहता था, या जब जब भी मैं इसको या उसको देखता था तो अपने आप को आई वुड इमेजिन माई सेल्फ टू बी देयर. मैं वैसा नहीं था. आई डेंट हैव दीज काइंड ऑफ larger than life dreams. I was more involved with the craft of it. And after मेरी बहुत टिपिकल सी लाइफ स्टोरी रही है. साइंस बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस, एंड उसके बाद इंजीनियरिंग. एंड जब जब the education side of things were finished, मतलब आप final. भी एक इंजीनियर लड़के हो जिसने मतलब टिपिकल दिल्ली बॉय जी, इंजीनियर गाय जी. और जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा रखा है। बट वही होता है इवेंचुअली. आई फील क्या होता है, once you as a individual also evolve, you grow out of the phase of just being a boy, and you've satiated जो भी आपके पेरेंट्स के विशेस होते हैं. उसके बाद एक इंटरनली एक आता है, यार अब मुझे वो करना चाहिए जो मुझे चाहिए, या मुझे जो करना है. So yes, there was a point where I had to tell my parents that, listen, this is what I really want to do, and I think I should give it a shot. And I still They remember supported you. they, of course, they support me now, but initially, so my parents are very type A personalities, and Okay. they're very hardworking. They're somebody who have really done well for themselves, and it's been purely through education. So उनको पढ़ाई के मामले में they were always like, this is something that they were quite strict about it. तो इनिशियली वो थोड़ा सा पुश बैक फील होता ही है, बिकॉज आप एनी पेरेंट वुड इमेजिन कि अरे यार यू स्पेंड सो मच टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी ऑफ योर्स इनटू वन फील्ड. थोड़ा सा डर भी रहता है कि आप सडनली बॉम्बे जाके ये करना चाहते हैं. बट आई थिंक thankfully things just worked in my favor, and I was able to kind of convince them ki, this is something that I really want to do. And I hope they're happy now. Now that I'm actually doing better for myself. But it's not even better or worse ki baat nahi hai. It's eventually they also realize ki this is something that brings me happiness. And I think at the end of the day, any parent, irrespective of how strict they are, they just want their kids to be happy. एंड आई थिंक आप अगर उनको वो जाहिर कर देते हैं कि यार, उनको दिखता है कि यार अरे दिस गाय इज द हैप्पीएस्ट ऑन सेट, तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू देम. स्मरण, क्योंकि बिग बॉस शुरू होने वाला है, तो इफ यू विल गेट अ चांस टू गो इनटू बिग बॉस हाउस, तो क्या आप जाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं. I'll be very honest, no, बिल्कुल भी नहीं. That's something that I don't understand it. I've never watched it in my life. का Oh my एक God.
एक एपिसोड नहीं जानता हूँ, इतना मुझे पता है खाली कि सलमान सर होस्ट करते हैं, दैट्स ऑल आई नो अबाउट दैट शो। एंड हाँ, अब कहते हैं नेवर से नेवर, बट दैट्स समथिंग दैट आई वुड नेवर डू इन माय लाइफ। कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा मना करते हो, वो चीज़ ज़रूर आपको करनी पड़ती है, तो मे I बी hope शायद वो not. आपको अपनी बात I पे hope not. करने I दें। hope not. I really hope not because uh, यू डोंट लाइक कंट्रोवर्सीज़ एंड वो झगड़ा, लड़ाई जो होती है घर नहीं, में। वो बात नहीं है। बात ये है कि अगर झगड़े पे मैं उतर आया ना, तो आज तक जो आपने देखा है वो कुछ भी नहीं रहेगा। ओह माय दिक, गॉड! हाँ, दिक्कत वो है, क्योंकि द फिर कोई कोई पाबंदियां नहीं है। रूल्स रूल्स आर देन, अगर मैं झगड़े पे आता हूँ तो देयर इज नो रूल, दैट्स ओके, फॉर अ फैक्ट। तो मैं तो पहले दिन ही मुझे बाहर कर दिया जाएगा, अगर अगर वहां पे कुछ भी ऐसा रूल है, क्योंकि वो टूटना ही है, वो तब टूटेगा आप ही। पहले दिन नहीं, तब आप जीत कर आओगे अगर आप ये बता रहे हो तो। बार बार वो क्या बोलते हैं उसमें, दैट वाइल्ड कार्ड एंट्री वो बार बार लाते रहेंगे, बिकॉज उनको पता रहेगा कि यार ये तो कुछ करेगा कांड। ये टीआरपी बढ़ा रहा है हमारे शो का। एग्जैक्टली। स्मरण, यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो क्योंकि आप काम की वजह से यू शिफ्टेड इन मुंबई, सो डू हम्म। यू मिस दिल्ली, और दिल्ली को मिस करते हो, सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो दिल्ली का? यार पता है, मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ नहीं, मैंने अपनी स्कूलिंग करी है वहां पे, ओके, एंड दैट ऑल्सो फोर्थ टिल ट्वेल्थ। ओके, एंड फिर मैं उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए यूएस चले गया था। तो टू बी टू बी फेयर, मैंने अपनी those settling in ages of my life मैंने दिल्ली में नहीं करा। Had I done my college in Delhi, then I would have understood Delhi a bit more. But खाली मैं ओके, स्कूलिंग करने के बाद there's nothing to miss really। मैं वहाँ का खाना मिस करता हूँ जरूर। I miss the winters of Delhi। That's something that you don't get in Bombay at all। बॉम्बे में लिटरली आप टी शर्ट एंड शॉर्ट्स में पूरा साल निकाल सकते हैं। But and the vibe of Delhi, there are places in Delhi where you just there's so much variance, right? आप कनॉट प्लेस में कुछ और देख सकते हैं, आप करोल बाग में कुछ और देख सकते हैं। तो इट्स जस्ट या दैट करेक्ट, दैट वेरिएंस ऑफ दिल्ली इज व्हाट आई मिस। बिकॉज यहाँ पे बॉम्बे में आई फील सब कुछ बहुत सिमिलर है। सबके घर आलीशान है, सबके ऑफिसेज आलीशान है, बट आप जब रास्ते पे निकलते हैं तो सब कुछ समान है सिमिलर ना। है। या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम है, तो मैं जी। लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी कि व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कि हम आपको और देख सके। सो मैंने अभी रिसेंटली, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि दिस ईयर दिस इज माय थर्ड प्रोजेक्ट दैट हैज रिलीज। इसके पहले 36 डेज करके एक शो आया था सोनी लिव पे, एंड उससे पहले जियो पे रणनीति करके एक शो आया था। देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट दैट्स इन द पाइपलाइन। मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, एनडीए साइन है। बट यस, दिस प्रोजेक्ट कलर्स ऑफ लव इज द first lead project of mine, and I hope that it does well. It has its own legs and it takes it places that it should reach, and I am given more opportunities to play lead characters. I thank you so much, Smaran, for your time and all the very best for your film Colors of Love, जिसको मैं भी देखूंगी। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर जाइए और देखिए हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय बाय, Please, स्मरण। bye, take care, thank you.